so hello and good morning and welcome to the new video of this channel directly from Los Angeles भाई। तो LA में बैठा हूँ, धूप पड़ रही है मेरे चेहरे पे और अब हम निकलने वाले हैं। मैं यहाँ पे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की ट्रिप से आया हूँ, तो आज हम उस जगह पे जाने वाले हैं जिससे ये यूनिवर्सिटी की ट्रिप का जो मिशन है वो अकम्प्लिश हो जाए। आज हम जा रहे हैं होम बॉय इंडस्ट्रीज करके, वही तो जगह पे, वही तो कैफे में। उन्होंने कुछ तो ऐसा शुरू किया है कि जो लोग यहाँ पे ऐसे गैंगस्टर वैंगस्टर थे, टैटू चेन वेन पहन के, वो सब जो गलत चीजों में थे, नशीली पदार्थों में थे, ड्रग एडिक्ट्स थे, ये सब बातें थी, तो उनको सुधारने के लिए उनका हृदय परिवर्तन जब हो जाता है या पता नहीं कर देते हैं, उस हिसाब से फिर वो सब लोग यहाँ पे काम करते हैं। ये मिशन पूरा करना है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जरा कि ये भी देखा हो तुम कि कैसे काम हो रहा है ये सब, तो ये ऐसे मदद करते हैं लोगों की। तो आज हम यहीं पे आके खाना खाने वाले हैं उनके हाथों से। गाइस ये सब लोग जो बैठे हैं, ये सब लोग गैंगस्टर्स रह चुके हैं। ये देखो, ऐसा अभिजीत कह रहा है, ये यहाँ पे सही होने आए हैं एक तरीके से। अब ये लोग एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। बापूजी ने इनके सर पे हाथ फेर दिया था और इनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब मुझे जिनसे इनकी पर्सनल स्टोरीज जाननी है कि कैसे रहा होगा, इन्होंने क्या क्या किया होगा जिंदगी में, क्या क्रेजी चीजें होंगी भाई। लेकिन लोग देख के समझ तो आ रहा है, क्रेजी सीन है एकदम, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। सही है, मुझे लगा था पोपट पड़ाकू होगा, लेकिन मुझे तो अब क्यूरियोसिटी हो गई है, इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि क्या तरीके का पास्ट रहा होगा, क्रेजी एकदम भाई, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं एकदम भाई, वैसे वाले टैटू वैटू है। क्या लोग रहे होंगे, क्या अपने टाइम के वो रहे बदमाश अभी की होंगे। उसी का तो पैसा अंदर करने के लिए खोला है। अरे मुझे क्या पता क्या हो। अभिजीत तो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेता है। कलयुग ये तो बात है। कलयुग में अच्छाई में भी बुराई होती है। देखते हैं क्या मामले हैं अभी इस जगह के। जरा ये अंकल हमें पूरा टूर देने वाले हैं, यहाँ पे फ्री ब्रंच मिलने वाला है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो कुछ खाया नहीं। कोल्ड कॉफी मिल जाए ना पहले, मजा आ जाए, पर देखते हैं कब मिलेगा खाना पीना। तो You're right there, right here. Where were you guys with? Okay. If you want to know a little about me, I grew up in Boyle Heights, member of one of those gangs over there. I grew up over there. I got into one of those gangs when I was around 11, 12, something like that. By the time I started junior high, I was already well on my way to really representing my neighborhood. When I was around 16, 17 years old, I'm in a different part of the city, like the south side. So I'm away from my neighborhood. It's the middle of the day, it's a sunny day like this, and I'm sitting at a bus stop. I should have been paying more attention. I usually was when I wasn't in my hood. Even in my hood, I was paying attention, but more so when I was in someone else's neighborhood, because you never know. And so I'm sitting there, and someone walks up behind me. I didn't see him, and he puts a shotgun to the back of my head, a double-barrel shotgun. I knew that it was a sawed-off shotgun, so he had sawed off part of it, easier to conceal, easier to carry. And I knew that it was sawed off because when you saw the barrel off of a weapon, the hacksaw leaves little sharp marks, and if you don't file them down, they're still there. You can feel them, and I felt that when he put the shotgun to the back of my head. And so he says, "Where you from?" "We from?" I said, he's hitting me up. He wants to know what gang I belong to. He wants to know really, actually what he wants to figure out is, do I belong to a gang that is an enemy gang to his gang? Because if I do, more than likely he's going to pull the trigger. That's what he wants to know. So he hits me up, and I've been hit up before. It's not the first time, not even the first time being hit up at the point of a gun, but not like this, right? So when he puts the gun to the back of my head, he goes, "Where you from?" Real quick, I jump up, not to run away. I jump up to face him, to give him my face. And before I even turn around, I'm already telling this man where I am from, what gang I belong to. I said my neighborhood. And so me, at 16 and 15 years old, I was not going to disrespect my neighborhood. I would rather that man shoot me than me disrespect my neighborhood. This is the mentality of the people that you see walking around here. This is where we come to in our lives when we get into the neighborhood. We don't know about this when we first get in. When we first get in, it's fun. You know, you're with your friends, you're getting in, you're all young men, 12 years old, 13, you're barely breaking into teenage years, and it's a lot of fun. It's parties, you know, you get high when getting high is still fun before it turns into tragedy. The girls, the parties, all that. The excitement too as well. As the years continue and this becomes your life, then you find out that you actually stepped into a horrible way of living, and more than likely you're not going to make it to 30 years old. And let me just say, this is not something that people tell us. You know, people don't come and say, "Hey, you guys, you know, the way you guys live, you're not going to make it." No, they don't know.
nobody from the outside knows what we know. We get to see for ourselves fairly quickly too what this life becomes. When I was 13, we were having a shootout right there in the projects with one of our enemies. So when the sun went down and the kids went in, we would come out and we would shoot it out with our enemy. He was shooting back every night for about a week straight. And then on this last night, my girlfriend's oldest brother was shot and killed. And then there was an explosion of violence, and 2 other people were killed inside that house we were shooting at. And so here I am now at 13 years old, going to my first funeral. And I wish I could tell you that it was the only funeral that I attended at 13, but it was not. And it was not the last funeral that I attended in my teenage years. We get to see for ourselves what this life becomes. We don't know it at first. We see homeboys getting sentenced to life without parole sentences. That means they're never coming back from prison. They get sent off at 17, 16 years old. This is the law in California back at this time. हमें तो बहुत कुछ जानने को मिला जो मैंने सिर्फ मूवीज में देखा है अभी तक। वो सब यहाँ असली में हो जाता है यार। ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो इस बारे में मूवीज बनती हैं वो ऐसा बहुत फिक्शनलाइज है, बल्कि वो तो कम फिक्शनलाइज है। यहाँ पे सब हो जाता है। अब हमें ये भैया दिखाने वाले, अंकल दिखाने वाले हैं। अंकल 1.5 साल पहले ही जेल से बाहर आए हैं वैसे 40 साल के बाद। तो अब हमें ये दिखाने वाले हैं कि ये प्रोग्राम में कैसे होता है। ड्रग एडिक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गैंग मेंबर्स वाला है। ये लोग 12-13 साल की उम्र से ही पार्ट बन जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो मतलब बड़े भी नहीं हो पाते क्योंकि पहले ही मर जाते हैं, या जेल चले जाएंगे 16-17 तक, या मर जाएंगे। ड्रग डीलिंग करते रहते हैं, गैंग वॉर्स होती रहती हैं, शूट आउट्स होते रहते हैं। बेसिकली अपने अपने नेबरहुड को रिप्रेजेंट करते हैं। हर नेबरहुड का गैंग बन जाता है और फिर गैंग वॉर्स हो जाती है। बहुत सीन है ऐसे। How it works is you have to be able to come into that door. You have to be able to, so like you I would say, Homebooks is not a prison outreach program. यहाँ पे अलग अलग तरीके की नीड्स के लिए लोग आते हैं, जो सारे होते हैं ना। कई सारे लोगों ने तो स्कूल ही नहीं पूरा किया होता, ड्रॉप आउट कर देते हैं। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन फ्री होती है, लेकिन वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, गलत चीज़ों में आ जाते हैं ना, यही गैंग वैंग में। तो उनको पढ़ाई करने में, वापस से हाई स्कूल डिप्लोमा ही लेने में हेल्प करते हैं। To the front of the desk, you talk about the tattoos you have. Tattoo treatment, not removal, treatment. It is about $300 to $500 a treatment. Yeah. It is a lot of money here in California, and the reason for why it is a lot of money is because the person doing it has to come with a medical background, start with, and then they have to get certified on the machines, on the lasers. We own the lasers. We got 2 in every room. We own the building. We don't pay rent. But the technician, that is the expensive part of tattoo removal. And the reason for why we are able to do that here at Homeboys for free is because the tattoo technician volunteers. What's up, Tom? The technician volunteers here at Homeboys. ये लोगों के टैटू रिमूव भी कर देते हैं फ्री में, क्योंकि टैटू से ही पहचान है ना उनकी। Welcome to the family. Glad to have y'all. I was in the county jail fighting attempted murder. I came here. My shield, I still had a little shield up because I thought, it was gonna still be like jail. But they showed me so much love to where it was like I opened up fast. I started going to the classes. When I'm hearing different stories, like OG's story, different stories, you're like, dang, man, like, I'm not the only one that went through stuff, and, you know what I mean? There's other people that went through worse, and they still won, you know what I mean? So if they can do it, I can do it. And if I can tell my story and help the next, like how they helped me, then I'm gonna do it. You know what I mean? So that's Excuse me, everybody. Welcome to our place. Don't apologize. Actually, I'm in your way. So yeah. All right, welcome. Hi. So me telling, just graduated high school for the first time. So I felt good giving my mom that. You know what I mean? I thought I was gonna die without giving her that. He has made tremendous accomplishments. To be able to go from not having a high school diploma to now being signed up with Python, being able to do all the jobs that are available to him. This is a remarkable transformation. I like to call him up because he's a good example of what I'm talking about when I tell you that this is what happens here at home. इनकी कैफे और बेकरी में आ चुके हैं। ये सब सामान बिकता है, इससे इनके पास पैसे आते हैं, और भी पता नहीं कहीं से आते होंगे। यहाँ पे सब लोग वही काम करते हैं और सही होने आते हैं एक तरीके से। पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज डिग्री करते हैं, फलाना ढिमकाना। और भी मैंने जाना कि वो यहाँ पे कैसे उस एक्चुअली में समझाते हैं, कैसे उनका हृदय परिवर्तन करना। हृदय परिवर्तन नहीं, मतलब कैसे टीच करते हैं अलग चीज। जैसे मैं छोटी बात कह रहा था कि मान लो सड़क पे आए कोई आदमी और उसका थोड़ा सा धक्का लग जाए, और
अगर उस आदमी ने सॉरी नहीं बोला, एक्सक्यूज मी नहीं बोला, तो भाई वो उससे लड़ लेंगे एकदम पूरा कि वो ऐसे कर दो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी सिखानी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए वही है नॉर्मल। उनको सिखाया जाता है ऐसे बचपन से, अपने उस गैंग में, अपने उस ग्रुप में जहाँ पे वो पले बड़े हुए हैं, अपने उस हुड में कहते हैं यहाँ पे, भाई बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं सहनी है किसी भी फॉर्म की। तो वो इतनी छोटी छोटी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं हैंडल कर पाते होते हैं। तो उन्हें ये सब भी सिखाना पड़ता है भाई कि अगर मान लो थोड़ा सा धक्का लग गया और अगर उसने सॉरी भी नहीं बोला ना, तो कोई ज़रूरत नहीं हो, कुछ नहीं करना। तो सामने से ऐसे क्वेश्चन आता है, अच्छा तब कुछ नहीं करना, बाद में जाके उसको सड़क के किनारे लेके जा, कहते कि नहीं कुछ नहीं करना। ये सब भी सिखाना पड़ता है इन्हें। तो ऐसे ही अपने टाइम पे काफ़ी बदमाश, गुंडागर्दी, फलाना ढिमकाना में लगे होंगे। मतलब छुटमुट बदमाशी नहीं है, हाई लेवल है, मतलब गोलियां वोलियां ये वो ड्रामे वो सब किया है इन्होंने। फिर ये जेल वेल चले जाते हैं, फिर वापस जेल में इनका थोड़ा हृदय परिवर्तन होता है, फिर ये वापस आके अच्छे इंसान बनना चाहते होते हैं ताकि इनकी एक प्लेस रहे सोसाइटी में। तो ये जगह उनको वो ट्रांजिशन में हेल्प करती है। इनकी मर्चेंडाइज भी बिकती है, मर्चेंडाइज भी ले सकते होते हैं। बढ़िया लग रहा है वैसे सामान भी, धड़ाधड़ काम हो रहा है। साफ बैठेंगे उधर, पूरा मेन्यू है हमारे पास, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अपने लिए मैक्सिकन मोका आइस्ड मंगाई है यार, बढ़िया कॉफी एकदम शानदार। बड़ी अलग सी है, बड़ी चीनी कम है। मैं तो जगी गया एकदम कॉफी पी के। तो इसने ऑमलेट मंगाया, इसको ऑमलेट तो मिला ही है, साथ में देखो क्या क्या सामान मिल गया है। अमोक ने ब्रेकफास्ट कैसा दिया मंगाया, फाड़ लग रहे हैं। मेरे 3 टाको आ चुके हैं, वो तो ग्रीन चिकन मोल कुछ है, एक टिंगा टाको है। चलो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ होम बॉय से निकल रहे हैं। अब हम अपने होमीज के साथ जाने वाले हैं अगली जगह पे।